Good evening. Welcome to this special edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में लाएंगे आप तक देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के समाचार। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आज आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, स्टूडियो में आपका स्वागत। जी शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार। The headlines: Finance Minister Nirmala Sitharaman releases Business Reform Action Plan 2020. Domestic stock indices logged marginal losses amid negative global cues. Rupee weakens to 78 rupees and 98 paise against the US dollar, and Brent crude prices hovers around $115 per barrel. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2020 जारी किया। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में मामूली नुकसान दर्ज। रुपया कमजोर होकर 78 रुपये 98 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर हुआ बंद और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $115 प्रति बैरल के आसपास रहीं। Well, to begin with, Finance Minister Nirmala Sitharaman today released the Business Reform Action Plan BRAP 2020 in New Delhi. In the report, 7 states have been identified as the top achievers based on implementation of the Business Reforms Action Plan. The states are Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Punjab, Telangana and Tamil Nadu. The report further mentions that Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Uttarakhand and Uttar Pradesh figure under the Achievers category, while Assam, Chhattisgarh, Goa, Jharkhand, Kerala, Rajasthan and West Bengal have been placed in the Aspirers category. On the occasion, Ms. Sitharaman said the nature of reforms had undergone change since 1991. She stressed that the government is implementing responsive reforms by nudging the states and union territories. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कारोबारी सुगमता को अब पूरे देश में प्रतिस्पर्धी और सहयोगी संघवाद की भावना से देखा जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि BRAP का उद्देश्य राज्यों की सर्वोत्तम कार्यविधियों से परस्पर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कारोबार के माहौल में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि BRAP का उद्देश्य भारत को दुनिया भर में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि अंडमान और निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुदुचेरी और त्रिपुरा को उभरते हुए बिजनेस इकोसिस्टम श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। Well, Dr. Sharma, this Business Reform Action Plan report, it was released today by the Honorable Finance Minister. It actually is in sync with the ease of doing business, which the Honorable Prime Minister has been talking of late, and of course for some time now. So, how do you see? As in, we see many states like Andhra Pradesh, Gujarat, and mostly states like Karnataka, Punjab, Telangana, they have been categorized under the top performers. But there have also been, we see that there are many states which have not quite come up to the level which was quite expected of them. Where do you see the schism? Where do you see the difference here? Yes, this is very, very important because now we are improving our ease of doing business, and earlier ease of doing business was provided by the World Bank. Now they have stopped providing the ease of doing business at the national level. But the government started under the DPIIT the ranking of the states according to the certain parameters which are called under the BRAP. So government started this exercise in 2016, and now the ratings are for the 2020. So this is some comparison between the adoption of the reforms by the states. Like these states, as you mentioned, Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Punjab, Telangana and Tamil Nadu. These states have adopted very significantly the BRAP reforms, which are
designed by the DPIIT, Department of Commerce, under the DPIIT. So that is the I think significant thing, which is creating lot of awareness amongst the government and the entrepreneurs of that particular state. Government is adopting the reforms and disseminating the reforms to the entrepreneurs, and government is making it possible to happen that more and more ease of doing business is happening in their respective territories. So this Andhra Pradesh is at number one, and last year was again these most of these states are from the earlier years also. So these states are adopting very much the reforms disseminated by the DPIIT. The purpose is to create awareness and to create conducive environment for the entrepreneurs to come and invest in their particular states for the growth and development of their respective territories. So I think this is the significant thing, that the states should adopt the best practices of each other. Now these states have set the benchmarks for the other states also. Now other states will also come forward to adopt those reforms to become or to come in the category of the top performing states. So I think this is a very healthy competition between these states, so that they are able to attract more and more investments from the domestic and from the international markets as well. जी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि BRAP का उद्देश्य भारत को दुनिया भर में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। तो भारत एक निवेश डेस्टिनेशन बने, इसमें आप क्या चुनौतियां अभी भी देखते हैं और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी काम किया जाना बाकी है? देखिए, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है, क्योंकि पहले जो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करता था, उसके ऊपर ज्यादा वो ग्राउंडेड असेसमेंट नहीं था। वो खाली 2 ही शहरों में से, दिल्ली और मुंबई में से कुछ सैंपल लेके वो भी ब्रॉडर लेवल पे उसके हिसाब से रेटिंग हो जाती थी। तो अभी का जो ये ग्राउंड टचिंग रिफॉर्म्स हैं, जिस तरीके से सरकार ने जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर एक एक चीज को चेक करना शुरू किया है कि क्या स्टेट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जो DPIIT ने एक पैरामीटर बनाया, क्या स्टेट ने उसको अडॉप्ट किया या नहीं किया, क्या उन्होंने आगे उस चीज को अपने जो रिस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास उसका अवेयरनेस आगे स्प्रेड किया या नहीं किया। तो अभी भी जैसे आपने पूछा कि अभी कुछ क्या, कहां पे कुछ पेन पॉइंट्स कहां पे हैं, अभी भी है बहुत सारा, उनको भी टाइम लगेगा। जैसे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट एक बहुत ही इम्पैक्टफुल है काफी। आज मंत्री जी ने भी मेंशन किया कि जो अभी हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उसको और रैशनलाइज करना है, हमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की और जरूरत है, जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो और हम ज्यादा से ज्यादा कंपेटिटिव बन पाए, जिससे कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज हो। तो वो कैसे हो पाएगी? जब उसका अवेयरनेस फैलेगी और दूसरा जो स्टेट्स आपस में एक हेल्दी कंपटीशन में आएंगी कि यस, इस स्टेट ने ये नंबर 1 स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा, कर्नाटका की ये स्टेट्स टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। अब इनमें इन्वेस्टमेंट्स के आने के ज्यादा से ज्यादा संसाधन होंगे। अब दूसरी स्टेट्स भी सोचेंगी कि हम भी इन चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। जब वो स्टेट्स कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो वो भी ज्यादा से ज्यादा अपने जो रिस्पेक्टिव टेरिटरी है उनमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स करेंगे अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और अपने जो स्टार्टअप्स हैं, जो भी वहां पे बिजनेस कम्युनिटी है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स करेंगे। और ना कि इससे बिजनेस कम्युनिटी को फायदा होगा, इससे रोजगार के संसाधन पैदा होंगे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉस्पेरिटी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। उससे कि लोगों की आमदन भी बढ़ेगी, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी। जब एक स्टेट बहुत अच्छा काम कर रही है और उसमें बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो उसी स्टेट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो अब वो एविडेंट है। जैसे हम FDI देखते हैं तो FDI ज्यादातर जो वेस्टर्न रीजन है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, इनमें सबसे ज्यादा FDI आता है। तो उसका कारण ये है कि रिफॉर्म्स जो है इन्हीं स्टेट्स में हुई है, या फिर आंध्र प्रदेश है जो अभी नंबर 1 पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आ गया है, और कर्नाटका है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है। तो ये सभी स्टेट्स जो है बहुत अच्छे से इन्होंने अपना रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए हैं। पंजाब भी उस श्रेणी में आ गया है। तो बहुत सारी रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए हैं। तो आने वाले टाइम में जो दूसरी स्टेट्स हैं, जो दूसरे कैटेगरी में आती हैं, जिनमें एक आगे क्षमता है नंबर 1 में आने की, जो एस्पायरिंग स्टेट्स हैं, तो उनके लिए भी एक आगे रास्ता दिखाई उनको देता है कि इस स्टेट ये हमारे से आगे इन पैरामीटर्स की वजह से आगे हैं। अगर हम भी इनको अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम भी उत्तम श्रेणी में आ सकते हैं। Truly, and that is the spirit of what we call the collaborative federalism. और अब रुख करते हैं शेयर बाजारों का।
कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच आज प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगभग सपाट बंद हुए। दोनों सूचकांकों में मामूली गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 53,000 जबकि निफ्टी 15,800 के स्तर के करीब बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 8 अंक फिसलकर 53,019 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19 अंक गिरकर 15,780 पर आ गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.74% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.54% के नुकसान में रहे। The Sensex and the Nifty today ended almost flat. Both stock indices fell marginally amid negative global cues. The Sensex closed near the 53,000 mark, while the Nifty closed near 15,800 levels. The Sensex slipped 8 points to finish at 53,019. The Nifty declined 19 points to settle at 15,780. And in the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap plunged 0.74% and the small-cap index ended 0.54% down. In the Sensex pack, 11 companies posted gains while 19 logged losses. Axis Bank was the top gainer as it climbed 1.7%. State Bank of India surged 1.4%. Kotak Bank rose 1.1% and NTPC added 0.9%. On the other hand, Tech Mahindra plunged 2.1%. Bajaj Finance tumbled 2% and Bajaj Finserv declined 1.7%. Tata Steel fell 1.6%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 6 sectors gained while 14 witnessed losses. Power sector gained the most as it added 0.8%. BankX rose 0.6% and the utilities sector ended 0.6% up. On the other side, metal sector declined 2.2%. Auto index lost 1.3%. Basic material and realty, both indices ended 1.2% down each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,328 companies gained while 1,947 fell. Shares of 145 companies remained unchanged. This is a very peculiar scenario that we are witnessing, Dr. Sharma, as in today, of course, it was very flat today, but over the past few sessions, there has been a sing-song kind of a pattern in the market. Volatility is at its, we can say at its at the topmost point at the moment. So how do we explain this? As in, this is a so confusing time for investors, for our listeners, whether to go for it, whether to hold back, whether to stay invested or what? What do you have? What are your advice, as in what is advice for this? Yes, this is very important question because markets are also confused because markets are not taking any direction. Markets are totally range bound. Sometimes if there are some good news, then markets go up by certain points. Like sometimes Nifty touches 16,000 on 16,300. But if some negative news comes, then the markets go down to the level of 15,700 or 800 or 600. That is the range between the markets. So major reason is the uncertainty caused by particularly inflation, and number 2, Russia-Ukraine crisis. Yep. So these are the factors which are causing the volatility in the markets, and these are two factors. If sometimes there is some positive thing that inflation is going to be under control, then the markets take it positive and goes up to the level of 16,300. But the Fed is increasing the rates. So that is a major challenge for the global economy because now during the last 2-3 years, the economy is driven by majorly the liquidity factor. Because economies like the advanced economies, they stimulated their respective structures with a lot of liquidity to rejuvenate from the impact of coronavirus. Yes. But now the inflation has become a biggest challenge for the many economies, not only for the advanced economies in the America or Europe, but for the emerging economies like India and other related economies. So now the Fed is increasing the rates. They have increased significantly, and they are planning to increase it further. If the inflation is not coming under control, inflation is 40 years high right now in US. So if the inflation is going up and up, then they increase the policy rates. But all the central banks are also working in a sync. Because if some central bank increases the policy rate and the other are not increasing, then disparities create a capital outflow. So that is also a major challenge. So now the Reserve Bank of India has also increased 2 times, 40 basis points and then the 50 basis point. Total increase is 90 basis points. But the positive thing is that still we are
optimistic, and we are anticipating that inflation has peaked in India and now it will start softening, majorly because of the high base effect of the last year, and plus the policy rates increased by the Reserve Bank of India. That was a knee-jerk reaction by the bank that has impacted the sentiments of businesses and consumers, and certainly there will be some impact on the demand also, and they will demand lesser for the goods and services, and there will be impact on the producers in terms of lesser demand, and they will also demand for lesser demand from the international commodities, international markets. So that will impact the international commodity prices. So the trajectory of controlling the inflation is very intact, and we must say that RBI has taken very calibrated step during the last 2 months to control the inflation. Though it was painful in a shorter period, but in the longer period, I believe the inflation will be adequately under control in the coming quarters. जी, और अगर हम देखें तो पूरे आंकड़ों पर नजर डालें तो इस जून महीने की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स जो है 2300 अंक नीचे आ गया, यानी कि 4.5% की गिरावट इसी महीने में है। आपने इन्फ्लेशन की बात की, आपने जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात की, तो इस पूरे जो अनसर्टेनिटी का जो माहौल बना हुआ, वातावरण बना हुआ है, उसमें एक छोटे निवेशक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उसके लिए कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जहां से उसको कुछ लाभ की उम्मीद हो? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी है या फिर डिसेलरेशन है मार्केट्स में, ये एक शॉर्टर पीरियड के लिए है। ये एक पासिंग फेज है जो कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऐसा फैक्टर सामने आया है कि मार्केट्स कंफ्यूज्ड है, मार्केट्स अनसर्टेन है और मार्केट्स रेंज बाउंड है। तो अभी छोटे निवेशक के लिए क्या है कि अगर वो ये चाहे कि मैं इस वॉलेटिलिटी को कैप्चर कर लूं या मैं इसमें से कुछ गेन ले लूं, वो उसके लिए गलत होगा। उसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो इंडिया इज ए लॉन्ग टर्म स्टोरी। इंडिया में ग्रोथ इंटैक्ट है। वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। हम सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है। हमारा ग्रोथ रेट अभी मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा है। हमारी ग्रोथ स्टोरी 1 साल के लिए नहीं है या 5 साल के, ये 10 साल की नहीं है। हमारी स्टोरी डेकेड्स के लिए है, जिसमें हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनेंगे, 10 ट्रिलियन भी बनेंगे और हम 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेंगे आने वाले 25-30 साल में। तो वो एक इंटैक्ट स्टोरी है हमारी। तो छोटे निवेशक को जब भी कोई ऐसी वॉलेटिलिटी आती है या डिसेलरेशन आती है तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा मौका होता है मार्केट में एंटर करने का, लेकिन फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्टर टर्म। अगर आज मार्केट में गिरावट आई है तो कोई एक रिटेलर उसमें परचेज करके बैठा है, वो ये मत सोचे कि उसको 1 हफ्ते में या 1 महीने में कुछ लाभ मिल जाएगा। वो अनसर्टेन सिचुएशन है, लेकिन डेफिनेटली उसको 1 साल में या 3 साल में उसको भरपूर लाभ होने वाला है। Well, we have lots coming up on the other side. It's time to slip into a quick commercial break. Stay tuned. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। वापस एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। अब नजर डालते हैं घरेलू मुद्रा के प्रदर्शन पर। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया डॉलर के मुकाबले 1 पैसे की मामूली कमजोरी से 78 रुपए 98 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.35% बढ़कर 105.47 पर कारोबार कर रहा था। Dr. Sharma, we have been seeing for some time that the rupee is going down. It's decelerating as compared when juxtaposed against the US dollar. But when we see in relative terms with other economies, especially the Asian economies, other emerging economies, it is not doing as bad as it is perceived. It has some resilience. We have resisted that downslide quite a bit. So how do you see the resilience of the Indian rupee as compared to the other emerging economic currencies? Yes, because as I mentioned earlier, that we are a long-term growth story and our fundamentals are significantly strong. But this deceleration, this weakness is majorly because of the global factors. Like the dollar index is
strengthening because of the increase in Fed rates. That's why the dollar is gaining strength. And in futuristic approach also, they are planning to increase the policy rates further, and the dollar will remain strong for a certain period of time. So that's why the rupee or the currencies in the emerging markets are undermined. So rupee is one of them. But as you mentioned, rupee is not that bad. We are the lesser depreciated currency in the emerging markets. We are not that much impacted. So that is a great thing. But comparatively, when the dollar rises, then that is natural that that will impact the rupee scenario. But I would like to mention that growth, GDP numbers, and our industry, our manufacturing, our domestic policy plan are also very, very strong. That's why rupee is not that much impacted by the global factors. But deceleration is there. But in the coming times, if the global economy stabilizes and inflation is coming under control by the Fed actions, and there is some stability in the Russia-Ukraine conflict, then definitely I believe the rupee will strengthen and will become stable at a certain favorable point. और अब चलते हैं वैश्विक शेयर बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजारों की बात करें। दुनिया के अधिकतर शेयर बाजार लुढ़क कर पिछले 6 महीने के निचले स्तर के करीब पहुंचकर बंद हुए हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा बढ़ती मुद्रास्फीति पर काबू पाने के प्रयासों से अर्थव्यवस्था में नरमी की आशंका से निवेशक चिंतित हैं। एशियाई शेयर बाजारों में भी आज गिरावट का रुख रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.9% और जापान का निकेई 1.5% लुढ़क गए। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग 0.6% के नुकसान में रहा, जबकि चीन का शांघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो अंतर्देशीय कारोबार में यहां भी गिरावट का रुख था। लंदन का FTSE 100 2% लुढ़क गया। फ्रांस का कैक और जर्मनी का डेक्स 2.6% की गिरावट में रहे। And moving on to the US markets, the S&P 500 and the Nasdaq ended marginally lower yesterday. The US stocks witnessed a volatile session amid investors' worries about rising inflation and probable interest rate hike by the US Fed. The Dow Jones Industrial Average added 0.3%, while the S&P 500 fell 0.1%. The Nasdaq composite indices ended almost flat. Dr. Sharma, as we see that all the investors all over the world, the US investors are also worried about the rising rates by the US Fed. There is this very tight rope walking which has to be done by the central banks, be it the Fed or the RBI or any other central banks, in taming the inflation. Now, there are 2 points here. One is, of course, to check the inflation, to bring it under control. And the second challenge, which is parallel to that, is to see that the economy doesn't suffer that much because of that rate hike. There is this one challenge. The other, of course, is the flight of the FIIs from the Indian markets. Obviously, if the rates get hiked there is no point for them to stay here, as we have seen over the past almost 6 to 8 months now. So how do we see this challenge, and what are the ways in which our central bank is going to address this? I think central bank they are moving in the right direction, because firstly they have to make it lesser lucrative for the international cartels, international speculators to hold the positions at high level, because there is a lot of speculation in the commodity markets, like in crude oil. Always speculation is there, and their cost of carry sometimes, when the liquidity is available, becomes very cheaper. So that's why they carry the positions, and they make speculative efforts in the market, and they increase the prices artificially. Then the prices are becoming real when they create such positions. But now, when the cost of carry becomes dearer, or they are not able to hold their positions for a longer period of time, then they start disseminating, or they are to lose their positions, and they are not able to hold their positions at a certain point of time. Then the prices of the international commodities start correcting. So the thought is to dampen their sentiment from the speculation.
with the increased cost of money. That is the one step that will impact the international commodity prices, and raw material cost will become cheaper, and then the producers will be able to buy at the lesser points, then the cost of production will also be reduced, then the prices will also come down. Number one. Number two, from the demand side, when you are increasing the interest rates, your consumers will be able to buy less, and there will be impact on the demand. They will be demanding lesser commodities or the production from the producers because of the lesser money in their hands. So the producers will again demand for lesser raw materials from the international market. So there will be overall impact on the aggregate demand, and prices will start correcting. So the central banks are moving in the right direction to control the inflation, but we have to see how much time this process is going to take to control the inflation actually, because majorly the inflation is driven by liquidity factors, speculative factor, which is prevailing in majorly the international commodity prices. So if that thing is impacted and dented with this move by the central banks, then the inflation will certainly come down, and particularly for the emerging markets, the things will be better, like India, because we are majorly challenged by inflation. True. Otherwise, there is no threat to the economy. We are very good in the GDP numbers. We are growing in ease of doing business. We are growing in our manufacturing processes. Infrastructure growth is there. We have a lot of plans in the infrastructure investment. But the inflation is a major culprit at this juncture, which has to be controlled by the calibrated steps which the RBI is taking, and the other central banks are taking there for respective economies. So if the inflation is coming under control in the next 2-3 months, or say in the next quarter, then I believe the economy will again be in the normal growth trajectory, and we will attain our anticipated growth number, which is at around 8 to 8.5% for the current financial year, and we will be the fastest moving economy in the world economic system. Right, and moving on to oil. Oil prices today edged lower in volatile trading as the market weighed concerns of global supply and a build in the U.S. fuel product inventories. Brent crude was trading at $115.50 per barrel, while the WTI crude prices were at $108.45 per barrel. Oil, it seems, has cooled down a bit from the highs that we have seen in not so very recent past. How do you see this going in the coming times, especially in the short term? Yes, that is, I think, the effect of the central bank's policies. Like the Fed has increased rate, dollar is strengthening. When the dollar strengthens, then the commodity prices are impacted naturally. So if the dollar remains strengthened for the certain weeks or months, then definitely there will be strong impact on the commodity prices, and they will start correcting and become normal in the coming times. और अब नजर डालते हैं सोने की कीमतों पर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अगस्त अनुबंध वाला सोना आज 270 रुपए की गिरावट से 50,460 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 690 रुपए टूटकर 58,375 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,806 प्रति औंस पर चल रहा था। डॉक्टर शर्मा, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सोने की कीमतें वहीं 50-51 के दायरे में ही चल रही हैं। माना यही जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो सोने की कीमतें बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, लेकिन सोने में मैं समझता हूं कि जो तेजी है वो बनी रहेगी, चमक उसकी बनी रहेगी, लेकिन इसमें गिरावट के कोई चांसेस नहीं है अभी। जिस तरीके की ग्लोबल सिचुएशन है, तो गोल्ड के प्राइसेस इंटैक्ट रहेंगे। डॉक्टर शर्मा, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू। And before we close, a reminder of the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman releases the Business Reform Action Plan 2020. Domestic stock indices log marginal losses amid negative global cues. Rupee weakens to 78 rupees and 98 paise against the US dollar. And Brent crude prices hovers around $115 per barrel. And that's all we have in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye till we meet again tomorrow. Market Mantra. Market Mantra.